Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 55 for that chapter number 18, body fluids and circulation. Very interesting topic, and you must have studied a lot about this topic in that 10th standard. Just some particular ideas you must have got about this. Now we have been learning regarding the composition of blood, and in earlier videos, do refer that. We have seen that blood has got two important components. One is known as the plasma and other is known as the formed elements. Okay, plasma is forming 55% part by weight of the blood and formed elements are forming 45% part by weight of the blood. And these formed elements, in other words, are called as the blood corpuscles. They are of three kinds we know: erythrocytes, leukocytes and blood platelets. Okay. Out of that, in earlier videos, we have studied in detail about the plasma and that erythrocytes. That is RBCs containing hemoglobin that we have seen. And the main function of RBC we have seen, what is that? Carrying out the transport of respiratory gases, oxygen up to the cell and CO2 away from the cell. ओके, अब WBCs के बारे में हमें लर्न करना है. रिमेंबर, each and every component of the blood has got definitely some important role without which our life would be not comfortable there. ओके, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं कैरी किया गया आरबीसी के द्वारा तो डेफिनेटली our cells will become dead. That means everything will become dead. So RBCs का रोल तो हमने जान लिया. अब ल्यूकोसाइट्स क्या है देखेंगे हम. Now as the word indicates, leukos means white and therefore leukocytes are also known as white blood cells, or simply they may be called as the white cells. Okay, because they are colorless, they do not have hemoglobin. RBC are red colored because they contain that red colored pigment known as hemoglobin. But here WBCs are colorless and they are without the hemoglobin. They do not have the hemoglobin. Due to lack of hemoglobin, they are colorless. And they are nucleated. Okay. Whereas human RBCs we have seen are अन्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉन्केव. पर ये न्यूक्लिएटेड है. वो रेड कलर है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ये कलरलेस है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. डिफरेंस ध्यान में रखो. देन एज कंपेयर टू द RBCs, they are having short lifespan. They are short lived. Only about 3 to 4 days they can survive average. वो तो सोल्जर का लाइफ जीते हैं, हम उनके फंक्शन जब देखेंगे तो देखेंगे. ओके, बट दैट्स व्हाई देयर लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट एज कंपेयर टू आरबीसी. आरबीसी का कितना है? 120 डेज, यू नो. देन दे आर राउंडेड, दे आर अमीबॉइड एंड फैगोसाइटिक. सम WBCs आर राउंडेड एंड सम आर अमीबॉइड. अमीबा मुझे बहुत पसंद आता है, कैसा भी फिगर निकालो चलेगा, isn't it? Having the irregular shape, that you know. And very importantly, they are phagocytic cells. What do you mean by phagocytic cells? That cells which can carry out phagocytosis, means engulf the foreign germ particle and digest it. Okay, ये बिल्कुल shoot at site जैसे होता है. And that means whenever they will find some of the germ particle there in the bloodstream, they will immediately catch them and they will engulf and finish. मामला खत्म. Okay, so this is called as phagocytosis. And that is done by them. Okay, they are called as the phagocytic. Very important character of that WBCs that you might have heard in the earlier standard, that is dipedesis. क्या टर्म है dipedesis? इसके बारे में MCQ भी आ सकता है, and even in the subjective paper also the question may be asked, what is dipedesis? We don't know. ऐसा नहीं लिख सकते आंसर, हमें आंसर लिखना चाहिए, isn't it? So dipedesis क्या होता है? What is dipedesis? Dipedesis
is the amoeboid movement of WBCs by which it can squeeze out and come out of the blood capillary through its minute pore. Isn't it? वो कैट कैसे जाती है बिल्कुल श्रिंक करके, हमें लगता है इसमें से कैट नहीं पास हो जाएगी, बट दैट इमीडिएटली श्रिंक्स एंड देन पासेस टू दैट. अगर समझो ग्रिल्स है कोई तो देखो एग्जैक्टली लाइक दैट. ये माइन्यूट लेवल पे ये क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरी का वॉल तो हमें मालूम है बहुत ही, wall of the blood capillary is very thin, you know. So what happened there, this suppose this is WBC there, then this is amoeboid, then it will squeeze itself. वो कुछ इस तरह squeeze हो जाएगी particularly, and then it will pass through the pore, and वो अपने को खुद का रास्ता बना देगी बाहर जाने का, and then बाहर जाने के बाद फिर वो खुल जाएगी. So it can come out of that blood capillary, it can squeeze out of the blood capillary and come into the body fluid also. यानी उसे अगर मालूम हो गया कि ब्लड कैपिलरी के अंदर तो नहीं है जर्म पार्टिकल, ये जर्म पार्टिकल ब्लड कैपिलरी के बाहर है, तो वहां पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं हमारे आर्मी की तरह. Isn't it? So they make the surgical strike there. For that purpose they go there. उरी देखो ना, बिल्कुल कितना अच्छा लगता है देखने को. सो दैट, और जिन्होंने किया कितना ब्रेव कार्य है वो. सो दैट पर्टिकुलरली दिस इज जस्ट लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई WBCs आर सोल्जर्स फॉर आवर बॉडी. दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ द जर्म्स. ये डायपेटिसिस ध्यान में रखो, टू स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी, एंड दैट इज बिकॉज द amoeboid नेचर. Then another important thing is that WBCs are larger than RBCs, whereas RBCs are having the diameter of near about 7 micrometer साइज उनका. तो WBC का साइज जो है that is 8 to 15 माइक्रोमीटर, वो भी माइक्रोन ही है. 1 micrometer is equal to 10⁻³ millimeter, you know. 10⁻³ millimeter यानी सेंटीमीटर का जो 10वां पार्ट होता है, 10 उसके जो डिविजन्स होते हैं वो मिलीमीटर रहता है, और उसका 1000वां पार्ट दैट इज कौन गिनता होगा किसको. सो दैट इज 10⁻³ मिलीमीटर. तो ये माइक्रोमीटर है, एंड दैट इज 8 to 15 माइक्रोमीटर साइज. ओके, लार्जर देन RBCs. देन few terms are there out of the book I am giving you because they are very important from NEET point of view. ल्यूकोपोएसिस नाम की एक टर्म है. इरिथ्रोपोएसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, न्यू आरबीसीज, वो उसे कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस. वैसे ल्यूकोपोएसिस क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ WBCs. So formation of WBCs is termed as, correct answer, leukopoiesis. और कहाँ पे होता है? The formation of that WBCs can take place in red bone marrow. Red bone marrow में होता है, spleen में होता है. It occurs in the red bone marrow, occurs in the spleen, in the tonsils, in the that particular lymph nodes, in the thymus gland. थाइमस ग्लैंड नाम की एक एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे चेस्ट में, वहां पर दैट पर्टिकुलरली एट डिफरेंट प्लेसेस इट इज प्रोड्यूस्ड. सो थाइमस ग्लैंड में जो बनते हैं उसे T4 लिम्फोसाइट कहते हैं, हम देखेंगे बाद में. ओके, लिम्फ नोड में भी बनते हैं, दे आर कॉल्ड द लिम्फोसाइट्स, B सेल्स नाम के. सो ये जो है पर्टिकुलरली टॉन्सिल्स, थाइमस, लिम्फ नोड्स, रेड बोन मैरो, स्प्लीन, दे आर द साइट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. Then another, leukocytosis, increase in WBC number than normal. Normal number मैंने कितना बताया था आपको, 6000 to 8000 per cubic milliliter of blood. That normal count of the WBC is 6000 to 8000. तो उससे अगर ज्यादा नंबर हो गया, then that is called as what? Leukocytosis. और एक टर्म है उसमें, ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया का नाम तो हम सुनते हैं, कथा में सुनते हैं, मूवीज में देखते हैं. तो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी को नहीं होना चाहिए.
ल्यूकेमिया का मतलब क्या है? ब्लड कैंसर. एंड इट इज द पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट. पैथोलॉजी का हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट इससे कई गुना बढ़ जाता है, 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड. तो आप तो कहेंगे यार सोल्जर बढ़ गए तो अच्छा हो गया ना, फिर उसमें डरने की क्या बात है? तो डरने की बात यह है, व्हेन द नंबर ऑफ दैट सेल्स इंक्रीज ट्रिमेंडस, देन दे डोंट हैव एनी डिस्टिंग्विश बिटवीन द जर्म पार्टिकल एंड द ओन पार्टिकल. तो ये अपने ही सेल्स को खाने लगते हैं. जिस व्यक्ति में ये नंबर बढ़ गया है वो ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं? उसके ही सेल्स को, बॉडी के सेल्स को खाने लगते हैं, नॉर्मल सेल्स को. एंड दैट इज डेंजरस. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर. तो ल्यूकेमिया के बारे में ये जान लो अच्छी तरह से. देन अनदर इज देयर ल्यूकोपेनिया, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी देन नॉर्मल. डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी देन नॉर्मल ये भी अच्छा नहीं है. तो बिल्कुल वीकनेस उसका हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर डिक्रीज हो जाएगी. अगर 4000 से उसको कम आ गया, देन दैट शुड बी ट्रीटेड. ओके, एंड बिकॉज दैट विल डिक्रीज द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ दैट, इम्यूनिटी पावर ऑफ दैट पर्सन. तो ये भी ध्यान में रखो, ल्यूकोपेनिया. ये ऑल दिस टर्म्स विच आई हैव रिटन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट देयर. मैं लिख के रखता हूं क्योंकि आप बार बार उसे देख सकते हो. ओके, और आप भी नोट डाउन कर सकते हो. Then dead WBCs are destroyed by phagocytosis in blood, liver and lymph nodes. डेड WBC का जो अंत्यविधि है वो ब्लड में हो जाता है. वो दूसरे उनके जो बाकी के WBC है वो उसको खा लेते हैं बाय फैगोसाइटोसिस. या इन द लीवर, लीवर में भी कुछ फैगोसाइटिक सेल्स है, कफर सेल्स. ओके, वो खा लेते हैं. या इन द लिम्फ नोड्स. सो दैट इज अबाउट द WBCs. So we have to learn about the types of WBCs, and that we shall do in our next video. All these points are very very important. तो ये फिर एक बार रिवाइंड कर लो, देख लो, या ये पॉइंट्स पूरे जो मैंने लिख के रखे हैं यहाँ पे आपके लिए वो नोट डाउन कर लो. नोट डाउन करने से आपकी मेमोरी में वो फिट हो जाएंगे. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल and subscribe to my XIth Biology and XIth Biology Shorts channel. Thanks a lot.